Hello guys, welcome to today's session in Concept. Today we will be learning about how you can trade with IndiaVix and we will be seeing various strategy, right? Now before starting the video, if you are new here, you can go in the description. There is a link below. With the help of that, you can download and install the Concept web application. After successful registration, you will get some free tools in the application that you can use for your trading. Okay, now in the application there is a learn section, and in video library we have made multiple videos for you based on Pro Plus strategies as well as on tools. Okay, so you can watch these videos in multiple languages. Okay, now at any point of time, if you guys are having any kinds of doubts or query, so you can contact us through support. Okay, so there will be contact number and email ID as well, right? So you can contact us and we will be there to sort your queries out. Right, now let's get back to today's session, that is how you can trade with IndiaVix. Okay, and what are the multiple various strategies that you can use with it. Okay, so first of all, when I'm talking about IndiaVix, okay, so IndiaVix, now what is IndiaVix, right? So IndiaVix will tell you about the volatility of the market, right? It is not talking about you can say a particular stock or particular index, but talking about the overall market sentiments, right? कितने टाइम के लिए? So it will tell you the volatility of the, for example, you can say Nifty for 1 year. Okay, for 1 year. So if IndiaVix is telling you like the IndiaVix is at 12%, so it will show you in 1 year the Nifty can move around 12% in upward direction or in negative direction, right? So ये आपको बताता है ओवरऑल आपका निफ्टी में कितना चेंज आ सकता है, मार्केट में कितना चेंज आ सकता है. That will be shown by the IndiaVix, right? Now at any point of time, if there will be some undefined movement, for example, if there will be undefined movement, for example कोई आपका डिजीज आ गया, ठीक है, कोई आपका डिजीज आ गया, सम अनएक्सपेक्टेड थिंग, ठीक है, वो यहाँ पे आकर हो गई, कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉज यहाँ पे आ गए, ठीक है. तो अगर ऐसा कुछ होता है विच इज नॉट ऑलरेडी डिफाइंड, एट दैट टाइम द IndiaVix विल चेंज वेरी रैपिडली, वेरी ड्रास्टिकली, ठीक है. बट फॉर एग्जाम्पल देयर इज इलेक्शन, सो वी ऑलरेडी नो, सो देयर विल बी इलेक्शन एट दैट टाइम, वी ऑलरेडी नो द बजट विल बी इन February, राइट? सो फॉर द डिफाइंड इवेंट्स, ठीक है, जो ऑलरेडी जो इवेंट्स होते हैं, जो डिफाइंड होते हैं, जो हमें ऑलरेडी पता है कि इट विल अकर एट दिस टाइम, ओके, दैट विल नॉट create any impact, or that will create a very minimum impact on IndiaVix, right? तो अगर कुछ भी ऐसा हो सकता है that is not defined, that will create a very huge impact in IndiaVix, right? Now if the IndiaVix will get impacted, at the same time the IV, the implied volatility will also get you can say it will change, ठीक है, with the change of IndiaVix. Right, now what are the various ranges that we can see, okay, in IndiaVix? So for that, what I will do, I will go directly in the Concept application, and in the analyze section you can see in IV there is a tool that is called the IndiaVix, right? So we will analyze the IndiaVix, right? Now this is the chart of IndiaVix with comparison to the price, right? Right now I am taking the data, so let's analyze it from the March 1. Okay, so I am analyzing IndiaVix with price from March 1, right? Okay, let's see how it moved with the price. So you can see the green line here, just a second, let me change the color. So the green line here is showing you the IndiaVix, right? And the yellow line, it is showing you the price. Okay, now the maximum IndiaVix, I can see it is 26.75, and the lowest I can see from here, that is my 10.20, right? 10.20. okay, and right now my VIX is going to 12.93. okay, now as we have already studied in IV also, the IndiaVix is also mean reverting. It means whenever it will go, when it will reach at its peak, or there will be a spike in IndiaVix, it will come down, so it will cool down, right? So it means my IndiaVix never remains at the top, right? So whenever there will be a spike in IndiaVix, at that time, after 1 or 2 days, it will get cooled down. So I can say it always stuck, or you can say stick to the bottom. It always stick to the bottom, right? You can see maximum number of the time your IndiaVix is at the bottom, right? So if it will go above, so you will be ready that it will come down, right? So the IV, or you can say the implied volatility, it will cool down. Okay,
Now when the IV will cool down, at that time the market will be in the, you can say, in the sideways direction, in the sideways direction. And when it is at its bottom, at that time you can expect like there will be some change in the IV, the India VIX can also increase. So at that time what you will do, you will go for the buying. Why I'm going with the buying? Because when the India VIX will be at the bottom, at that time the price will also be low, right? Because I can say there is a fear in the market. No, there is no fear in the market if my IV is low or India VIX is low. So if India VIX is low, it means the fear is less in the market. The fear is less in the market, right? So if there is less fear, it means the premium will be cheap and the people will go for the buying options, right? Or you can say buying futures, right? And at the time when the IV or India VIX is at peak, okay, at the time we know that it will cool down, right? So what we will do, we will go with the, or you can say we will go with the you can go with the delta neutral strategies. Why? Because the market will be in sideways, right? So I have to make the strategies that is Vega negative, and when I am at the bottom, I have to make the strategy that is Vega positive, you can say, right? Okay, now which will be the strategies that I'll make? So when the market is at bottom, I will go with the net debit strategies, okay, net debit strategies. And the when the Vega is at highest, ठीक है, या फिर आसपास है हाईएस्ट के, एट द टाइम आई विल गो विद द नेट क्रेडिट स्ट्रेटजीज के साथ मैं यहां पे जाऊंगा, ओके, आई विल गो विद द नेट क्रेडिट स्ट्रेटजीज. अभी हम सब देखेंगे विच विल बी द स्ट्रेटजीज दैट वी विल बी लुकिंग फॉर, ठीक है. नाउ यू कैन एनालाइज हियर, माय मार्केट इज एट 12.93, okay, and currently you can see this is the line from where many times my market went upward, right? So it means there are chances that right now my IV is comparatively lower, ठीक है. It means it can move above any time, okay. So if there will be some undefined events या फिर ऐसा कुछ आएगा तो it will move up, and at that time I have to ready, I have to go for the buying. Now I have told you what we will do, we will make the net debit strategies. So in net debit strategies you will be going for the spreads, ठीक है. आप किसके साथ जाओगे? Spreads के साथ जाओगे, ठीक है. क्या बना सकते हो? You can make bull call spread, आप bull call spread बना सकते हो, ठीक है. बुल कॉल स्प्रेड में आप क्या बनाओगे? सो इन बुल कॉल स्प्रेड व्हाट वी विल डू, वी विल बाय अ कॉल ऑप्शन एटीएम का, ठीक है. हम एटीएम का एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे और उसी के साथ वी विल बाय एक पुट ऑप्शन. किसका बाय करेंगे? ओटीएम का एक पुट ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है. तो यहां पे हमारा क्या होगा, हम एटीएम बाय कर रहे हैं तो इट मींस दैट विल बी अवर कौन सी स्ट्रैटेजी हो जाएगी? दिस विल बी अवर नेट डेबिट स्ट्रैटेजी व्हेन द इंडिया विक्स एट इट्स लोअर, ठीक है. तो जब नीचे होगा तो आप स्प्रेड्स बनाओ, ठीक है. कोई से बना सकते हो, बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हो. इफ योर व्यू इज बुलिश यू कैन मेक बेयर पुट स्प्रेड भी बना सकते हो इफ योर व्यू इज बेरिश इन द मार्केट, ठीक है. बट वी नो दैट द वोलेटिलिटी विल इंक्रीज, इट कैन इंक्रीज इन द बुलिश साइड और बेरिश साइड, बट देयर विल बी वोलेटिलिटी इन द मार्केट, राइट. सो एट द टाइम वी कैन गो फॉर द नेट डेबिट स्ट्रेटजीज, ठीक है. दैट इज यू कैन गो विद द बुल कॉल स्प्रेड एंड बेयर पुट स्प्रेड एज वेल, ठीक है. ओके, नाउ व्हाट इफ द मार्केट इज एट इट्स हाईएस्ट, ठीक है, या फिर हाईएस्ट में बोलूं या फिर ज्यादा बोलूं. फॉर एग्जांपल अगर अभी राइट नाउ 12.23 है, ठीक है, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन माय वोलेटिलिटी वाज लाइक दिस, ठीक है. तो वोलेटिलिटी यहां पे कितनी होगी? लेट्स सी यहां पे मेरी वोलेटिलिटी कितनी है. सो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है. तो आई कैन सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम my volatility was 20.37, right? So it was way more higher than the normal India VIX, right? So at that time I can predict my, you can see my volatility just spiked up from this point, right? It means it will cool down. So if it will cool down at that time, if I am here at this point of time on 4th August, so I will go with the net credit strategies. And what will be those strategies? So I can go with the triangle here. I can go with the triangle, I can go with the iron condor, I can go with the iron butterfly के साथ मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, ठीक है. ट्रेड करूंगा कैसे कर सकता हूं? लेट्स सी. फॉर एग्जांपल आई एम वाचिंग निफ्टी हियर, ओके. सो आई एम वाचिंग निफ्टी हियर. लेट मी टेक द चार्ट हियर, ओके. सो आई विल डायरेक्टली गो ऑन द चार्ट्स, ट्रेड एंड ऑर्डर, एंड आई विल अप्लाई निफ्टी हियर, okay. So let me take the chart of Nifty, right. Now the time frame that I'm using, that is I can use 1 day here, just a second, 1 day chart, okay, 1 day chart.
Okay, so it is here, right? Now, if my at any point of time, if my India VIX at its highest point, it means now the IV will cool down. Okay, so there will be sideways market, right? So what I'll do, I will see like which is the point at which from where my market can reject itself. So I can see this was the point. Okay, so there is a resistance at this point, right? There is a resistance at this point, right? So ये मेरा कहीं ना कहीं it is acting as a support before, right now it is acting as a resistance, okay? And I'm sure if my IV is cooling down, so market will be in sideways, ज़्यादा movement नहीं होगा. So I can predict like this will be my this will be my resistance, right, for the market. So 23,353 का मेरा resistance चल रहा है. Similarly, I will find a support also. तो सपोर्ट के लिए मैं क्या चूज कर सकता हूं? आई कैन चूज दिस एज माई सपोर्ट कि ये लेवल जो होगा ये मेरा सपोर्ट का हो जाएगा, दैट इज 24,922. ठीक है, अगर मैं इनको नियरेस्ट एक्सपायरी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस की तरह लेके चलूं, सो एट दैट टाइम इन द नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस, जस्ट अ सेकेंड, तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस मेरा क्या हो जाएगा? सो इट विल बी 25,300 आई कैन से. ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग माई मार्केट विल नॉट गो अबव इट. ठीक है, और यहाँ पे मेरा कितना जाएगा? 24,900. इट विल बी माई स्ट्राइक प्राइस. ठीक है, तो वट आई डू, आई विल सेल दिस वन एंड आई कैन सेल दिस वन एज वेल. ठीक है, मैं इन दोनों को सेल कर सकता हूं. ठीक है, आई हैव टू मेक श्योर कि जो इनका डेल्टा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका डेल्टा 18 चल रहा है, ठीक है, -18 चल रहा है, तो इसका डेल्टा भी अप्रोक्सीमेटली 20, 19 या 18 होना चाहिए. एंड दैट इज हाउ आई कैन क्रिएट अ डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी. ठीक है, सो व्हाट आई गेट अ प्रॉफिट फ्रॉम दिस साइड आल्सो एंड आई गेट अ प्रॉफिट फ्रॉम दिस साइड आल्सो इफ माय मार्केट विल रिमेन बिटवीन दीज टू लेवल. ठीक है, बिकॉज इंडिया विक्स इज आल्सो कूलिंग डाउन, मार्केट इज साइडवेज, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट. ओके, सो in this strategy I will get a maximum profit if I'll go with this type of triangle, right? So I have to make a delta neutral strategies in this scenario, right? So when the India VIX will be at its lower side, you will go for the spread positions, and when the India VIX will be at its highest point or near to the highest, at that time you will go with the delta neutral strategies. You will make a net credit strategy that will benefit you in your trading. ओके, सो आई होप गाइज ये सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. अगर आपको पसंद आए, यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. इफ यू आर न्यू हियर, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. थैंक यू सो मच. दिस इज योर ट्रेनर अंकित सिंह रावत. हैव अ गुड डे.